Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss one of the most important long question from this chapter, that is lymphatic system. So let's move to the classwork. So dear students, lymphatic system. One of the most important long questions in this chapter. तो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर. हमने बात की थी कि दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स मौजूद हैं ह्यूमंस में, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वी हैव डन विद इट कंप्लीटली. नाउ द लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज the lymphatic system is a transport system in humans. It is also present in other vertebrate animals. So we are specifically dealing with the human. So it is a transport system in humans which is responsible for the transport and returning of fluids from tissues of the body back to the blood. क्लियर? तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड्स, यानी कि मुख्तलिफ तरह का आगे बात करेंगे चल के, टिश्यूज एक फ्लूइड होता है जो कि लीक कर जाता है फ्रॉम द कैपिलरीज. तो वहाँ से जो फ्लूइड है उसको कलेक्ट करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना बैक टू द ब्लड. ब्लड से वो लीक होकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से लीक हुआ था और उसी को रिटर्न करना. दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्लियर? नाउ इट्स composition or the components of lymphatic system. So there are 5 major components of the system. Number 1, lymph capillaries. जैसा कि ब्लड कैपिलरीज थी इस तरह से लिम्फ कैपिलरीज.
Number 2, the lymphatic vessels. Number 3, the lymph masses. Number 4, the lymph nodes. And number 5, the fluid lymph. जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है, इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है. दैट इज एक्चुअली द फ्लूइड. Circulating and lymphatic system. Now, dear students, we are going to start from the lymph capillaries. So, lymph capillaries and blindly and the space around or surrounding the tissues. Clear? Or dear students, and blindly means blind एंड किसे कहते हैं? एक एंड ओपन और दूसरा एंड जो है वो आगे किसी और से कनेक्टेड हो, सो दैट इज ब्लाइंड एंड. सो ये ब्लाइंडली एंड करती हैं वहाँ पर उन टिश्यूज में जहाँ पर जो नेटवर्क आ रहा होता है कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क आ रहा होता है. क्लियर? द फ्लूइड, the interstitial fluid actually और interstitial fluid क्या डियर स्टूडेंट्स? जो fluid actually जो interstitial स्पेसिस में मौजूद है. और इंटरस्टिशियल स्पेस किसे कहते हैं? सेल्स के दरमियान स्पेस, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं. उसमें जो फ्लूइड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं. और एक्स्ट्रा cellular fluid accumulates, जब वो accumulate होता है, creating a pressure, उनके जमा होने से वहाँ pressure generate होगा, which will force the interstitial fluid to move into lymph capillaries. Clear? अब ये जो सेल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर हो चुका है, एक्चुअली इसे ही लिम्फ कहते हैं. क्लियर? द फ्लूइड मीन्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वन इन lymph capillaries it is called lymph. It is called lymph. जो पांचवा कंपोनेंट हमने पढ़ा
लिम्फेटिक सिस्टम का। तो लिम्फ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द इंटरस्टिशियल फ्लूइड when enters into the lymphatic capillaries or lymph capillaries, it is known as lymph. Clear? तो ये एक्चुअली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही है, वो प्लाज्मा का जो वही सारा कुछ है। और स्टूडेंट्स एक और चीज़, चलिए पहले इसको देख लें, फिर उसके बाद उसको मैं डिस्कस करता हूँ। lymphatic vessels. What are lymphatic vessels? The lymph capillaries join to form lymphatic vessels. Lymphatic vessels. The intercellular spaces, between the lymphatic vessel cells, जो lymphatic vessel cells जिससे lymphatic vessels बनती हैं, उनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस, are larger than the blood capillaries. इसका फायदा, it allows movement of large molecules into these vessels, into the lymphatic vessels. Clear? अब स्टूडेंट्स, ये जो से लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ये एक्चुअली दो तरह की होती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ लिम्फ नोड। तो पहले मैं इसको लिम्फ मैसेज को डिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद लिम्फ नोड पे आएंगे और इसको के साथ कोरिलेट करेंगे। द लिम्फ मैसेज और लिम्फॉइड मैसेज भी कहते हैं इनको, include spleen, bone marrow, and the tonsils, adenoids, here, and thymus gland. So all these serve as lymphoid masses. ये बड़े बड़े organs हैं जो कि serve which are the part of the lymphatic system, and they will fight with the microorganisms. उसके बाद देखेंगे the fourth component, that is lymph nodes. So on the way of lymphatic vessels, there are masses of connective tissue, मीन्स हैं वो लिम्फॉइड मैसेस, लेकिन उसके ऊपर क्या मौजूद है, कनेक्टिव टिश्यू। दीज आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स। उनको लिम्फ नोड्स कहा जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स के रास्ते में कुछ लिम्फ मैसेज आते हैं एंड दे आर कवर्ड विद कनेक्टिव टिश्यू, और इन मैसेज को कहते हैं लिम्फ नोड्स।
और लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स? The lymph nodes are present in axilla. एक्सिला कहते हैं आर्मपिट को, आर्मपिट, आर्मपिट्स, ठीक है, ये हमारे आर्मपिट्स होते हैं, इनको एक्सिला कहा जाता है। इसके अलावा नेक में, इन द नेक, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रॉइन। अब ग्रॉइन क्या चीज़ है? नेक का तो पता चल गया, नेक, और फिर उसके बाद आर्मपिट्स एंड ग्रॉइन। ग्रॉइन यहाँ से देखिएगा, so let's suppose this is a human body. तो अपर थाइस और लोअर एब्डोमेन, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है। दिस रीजन इज कॉल्ड ग्रॉइन। क्लियर? यहाँ पर जो एक ट्रायंगल सी बनती है, इसे हम कहते हैं ग्रॉइन। यहाँ पर मौजूद हैं, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लेग्स एंड द चेस्ट एक्सेट्रा। तो तकरीबन पूरी बॉडी में ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसका मैं आपको एक पूरा डायग्राम के जरिए समझाऊंगा कि इस लिम्फेटिक सिस्टम का असल में काम क्या है। So this is a rough diagram of heart, aorta, and all the structures. Yeah. Aorta, it is actually supplying the arterial blood or the oxygenated blood to all the part of the body. This is the system. And then it divides and forms the capillary network. And then the veins and venules. And here is present the venous system, ultimately moving the blood back to the heart and to the right atrium. So this is the blood circulatory system, as you know. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टार्ट होता है these are the blind-ended capillaries of the lymphatic system.
So this is the lymph node. So on the way to the lymphatic vessels, there are the masses which are covered by connective tissue. This is lymph node, and these are the lymph capillaries. Here, lymph capillaries, they join to form the lymphatic vessels. So these are the lymphatic vessels, और ये vessels actually ये कहलाती हैं, these are the afferent lymphatic vessels. ये एक, ये दो, इसी तरह से और बहुत सारी और lymph nodes. तो देखें एक से ज़्यादा lymphatic vessel एंटर हो रही है lymph node में, लेकिन ये निकल यहाँ से एक ही रही है. So this is efferent, जो यहाँ से एक निकल रही है, that is efferent lymphatic vessel. और ये बहुत सारी efferent lymphatic vessels, they join to form the major thoracic duct. और major thoracic duct यहाँ पर pour कर रही है into this vein. This is known as subclavian vein, और subclavian vein ultimately drains into the vena cava. This is vena cava, और फिर वो drain करेगी heart के अंदर. Clear? So this is the direction and the way the lymphatic system works. तो यहाँ पर मौजूद है interstitial fluid, ये cells, और ये capillary ने ये interstitial fluid. अब ये interstitial fluid accumulate होकर प्रेशर जनरेट हुआ और ये किस में चला गया, lymphatic capillaries के अंदर जा रहा है. So this very greenish fluid is actually the lymph. This is lymph, जो असल में पहले क्या था, interstitial fluid था. Clear? So interstitial fluid है, जब ये जमा होकर और प्रेशर के साथ एंटर हो जाएगा into the blind ends of the lymph capillaries. So this is called as lymph. और lymph फिर आगे ऊपर जो है lymphatic vessels, the afferent lymphatic vessels, more than one afferent lymphatic vessels, they enter a single lymph node, and only single efferent lymphatic vessel will drain out. और यहाँ से फिर into the जितने भी पूरे हमारी बॉडी के हैं जो lymphatic vessels हैं, they will drain into the major thoracic duct, और major thoracic duct जो है ये drain करेगी into the subclavian vein, और subclavian vein drain करेगी vena cava में, और vena cava से पे हार्ट में. तो इस तरह से जो टिश्यूज के अंदर जो फ्लूइड रह गया था, दिस इज द टिश्यू लेवल. तो यहाँ पर जो टिश्यूज के अंदर फ्लूइड रह गया था, इनके ये ब्लड कैपिलरीज में से ऊज आउट होकर जो कि एक्सचेंज होने के लिए आया था, जो एक्सेस रह गया था उसको रिटर्न कर दिया, उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया. अब इस दौरान हो सकता है यहाँ पर रास्ते में इस फ्लूइड के अंदर हों वायरसेस या बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों. तो जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो जो लिम्फ नोड्स जो हैं, दे हैव मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस का पता डियर स्टूडेंट्स, मोनोसाइट्स कंबाइन करके जो बड़े सेल्स बनाते हैं, और साथ में मौजूद हैं यहाँ पर द लिम्फोसाइट्स. क्लियर? लिम्फोसाइट्स भी मौजूद हैं, ये भी इनको किल करेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ से किल करने के बाद ये रिटर्न करेंगे टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे इनके कि ये एक्चुअली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए तो हार्ट था, वो उसके फ्लो को रेगुलेट करवा रहा था. तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो किस तरह से रेगुलेट होगा, आइए उस पर बात करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, द फ्लो ऑफ lymph
The students, flow of lymph is maintained by the following number one, movements of skeletal muscles we are always usually moving around over here and there. तो उन मूवमेंट्स में जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो वो मूवमेंट्स इन लिम्फेटिक वेसल्स को कंप्रेस करती हैं और इनमें जो लिम्फ है उसको फ्लो करवाती हैं टुवर्ड्स द थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट. एक चीज़ जहन में रखिएगा, जितना भी फ्लो है ऑल द लिम्फ इट विल बी टुवर्ड्स द थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट. जब मेजर थोरेसिक डक्ट जितने भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं इन सब का फ्लो, जैसे मैंने यहाँ पर एरो से भी शो किया, इट इज टुवर्ड्स मेजर थोरेसिक डक्ट व्हिच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द सबक्लेवियन वेन. तो एक तो ये चीज नंबर वन. नंबर टू आर द मूवमेंट्स ऑफ विजरा. डियर स्टूडेंट्स, विजरा आपके लिए शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए नई बात हो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम एज अ गुड स्टूडेंट्स आपको पता होगा. विजरा ये बेसिकली ऑर्गन्स होती हैं विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटीज़. ऐसे ऑर्गन्स जो बॉडी कैविटीज़ में मौजूद हों उन्हें कहते हैं विजरल ऑर्गन्स या विजरा इन शॉर्ट. सो लाइक द चेस्ट कैविटी, ये हमारी बहुत बड़ी कैविटी है, इसमें अ पेयर ऑफ लंग्स एंड अ हार्ट इज देयर, तो ये विजरा कहलाएगा. इस तरह से एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पर मौजूद है, इंटेस्टाइन्स and liver and pancreas and the spleen and the large intestine and the kidneys. So the organs lying in these cavities are called as viscera. तो ये भी मुसलसल मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर भी मूवमेंट्स हो रही हैं, मीन्स के इनके अंदर भी मूवमेंट्स हो रही हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स. सो उनकी वजह से भी ये फ्लो जो है लिम्फ का रेगुलेट होता है. नंबर थ्री, द ब्रीदिंग मूवमेंट्स. तो जब तक इंसान जिंदा है तो ब्रीथ तो कर रहा है, चाहे वह सो रहा है, चाहे वो जाग रहा है, एनीथिंग. क्लियर? तो सांस तो लेना है. तो ब्रीदिंग मूवमेंट्स भी यहाँ के जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं इनको अल्टीमेटली जो सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन ये बेसिकली यहाँ पर क्लेविक या हमारी जो क्लेविकल होती है इस रीजन में ये सब क्लेवियन वेन होती है. क्लियर? तो यहाँ पर जाकर उसको पोर करवाने में, फ्लो करवाने में हेल्प करेंगी. और चौथी बहुत ही अहम चीज, वाल्व्स. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जितने भी ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं इनके अंदर मौजूद हैं जगह जगह के ऊपर वाल्व्स. देयर आर प्रेजेंट वाल्व्स. तो जैसे वेन्स के अंदर वाल्व्स थे इसी तरह से इनके अंदर भी वाल्व्स मौजूद हैं. जैसे वहां पर वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते थे, यहाँ पर भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे. यहाँ तक पहुंच गया अगर लिम्फ तो इसको आगे कोई धकेलेंगे, पीछे को धकेलने नहीं देंगे, ठीक है, इसको वापस नहीं देंगे. सो दीज आर द वाल्व्स. सो दीज फोर फैक्टर्स दे हेल्प इन द फ्लो ऑफ द lymph. Now dear students, some major functions which are performed by the lymphatic system. Functions of lymphatic system. So the first thing, very important thing, that is every day
means daily in an average adult, एक average adult में like me and like you, 3 liters more fluid leaves the blood capillaries than is reabsorbed. The lymphatic system returns these 3 liters. These 3 liters of fluid containing proteins, water, and other components, dissolved components of the plasma or the extracellular fluid. तो पहली बात तो ये MCQ के लिए मार्क कर लें कि डेली एवरेज कितना लीटर, यानी ब्लड कैपिलरीज में से कितना, वो अब हमने पढ़ा था कैपिलरीज में कि उनमें से लीक होता रहता है, ठीक है, और फिर वो वहाँ से रीअब्सॉर्ब भी होता है, ठीक है, लेकिन जितना लीक होता है उसमें से 3 लीटर फिर भी रह जाता है, ठीक है, ये 3 लीटर्स फिर भी रह जाता है, वो इतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब इस 3 लीटर को अगर ये 3 लीटर रह जाए डेली बेसिस के ऊपर, तो फिर तो हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। सो इसमें तो और ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, हार्ट को इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर इस सिस्टम को जो है इसलिए बनाया कि ये जो अब जो 3 लीटर रह गया है या इससे भी ज़्यादा समटाइम्स रह जाता है, इसको वापस से रिटर्न करना है टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मैंने वहाँ पर सीक्वेंस समझाया था। नंबर 2, लैक्टील्स। लैक्टील्स पढ़ा था डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 में, न्यूट्रिशन में। लैक्टील्स क्या है? एक्चुअली these are the lymphatic capillaries and the villi. Clear? So actually जो आपने देखा था विलाई का स्ट्रक्चर, तो उसमें लैक्टील था बिल्कुल सेंटर में। तो ये वहाँ पर जो लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर, वहाँ पर उसकी म्यूकोजा और सब म्यूकोजा वहाँ से निकल कर अल्टीमेटली विलाई के अंदर वो चाहती हैं उनकी ब्रांचेस, उनको हम कहते हैं लैक्टील। तो जो लैक्टील्स हैं दे एब्जॉर्ब लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स। आपको याद है डियर स्टूडेंट्स? अब ज़रा वो चैप्टर निकाल के देखिएगा, चैप्टर नंबर 12, उसमें जब एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि एमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज और फ्यू लिटिल क्वांटिटी ऑफ स्मॉल जो लिपिड्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होती हैं? इनटू द कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। लेकिन ज़्यादातर जो लार्ज होते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ द फैट्स, वो किसके अंदर एब्जॉर्ब होता है? इनटू द लैक्टील्स। क्लियर? And on having a fatty meal, अगर आप कोई ऐसा खाना खाएं जिसमें चर्बी ज़्यादा थी, पाए खा लिया आपने, ठीक है, या सिरी पाए जिसे कहते हैं, या और इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा थी, on a fatty meal, these large fat molecules may make up to 1% of lymph। तो lymph का 1% तक बना सकते हैं, जो lymph यहाँ से
जा रहा है लिम्फेटिक सिस्टम में 1% तक राइज कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्चुअली इन्होंने ही एब्जॉर्ब करना होता है, किन लैक्टील्स ने। नंबर 3, द लिम्फेटिक सिस्टम also provides defense against invading microorganisms. जैसा कि हमने पढ़ा द lymph nodes, द lymph nodes यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैंने बताया था lymph nodes के अंदर क्या मौजूद है, मैक्रोफेजेस एंड lymphocytes. The lymph nodes have macrophages and lymphocytes which fight against these microbes and sometimes it results in painful swelling of lymph nodes. In certain diseases, for example, in mumps, पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 5 में डियर स्टूडेंट्स, मम्प्स वायरल डिजीज है, कनपेड़ा जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो है स्वेलिंग, पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग बिकॉज यहाँ के इस एरिया के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, और इनके अंदर डेड माइक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स एंड द पैथोजन वो मौजूद होता है। क्लियर? नंबर 4, as the lymph node filters lymph, जैसे कि हमने देखा यहां से जो लिम्फ आ रहा है इसको कौन फिल्टर कर रहा है, ये लिम्फ नोड। द स्प्लेन, अब स्प्लेन क्या था डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक लिम्फॉइड मैस है, आपको बताया था स्प्लेन एंड द बोन मैरो एंड द थाइमस ग्लैंड एंड टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको बताता चलो, एडिनॉइड्स बताना मैं शायद भूल गया था। तो एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स में फ़र्क सुन लें ज़रा। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स आमतौर पर हमारे जैसे हम मुंह खोलते हैं तो यहाँ पर जो आर्क सामने नज़र आती है साइड्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ये 3 तरह के टॉन्सिल्स होते हैं, ये सामने यहाँ पर पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर गले के अंदर भी होते हैं, ठीक है, और फिर एक होते हैं इनको फेरेंजियल टॉन्सिल्स कहा जाता है, और एक होते हैं नाक और थ्रोट के यहाँ पर बैक के ऊपर, जहाँ पर हमारा नोज एंड हो रहा है उसके बिल्कुल पीछे, ये आमतौर पर ओपन माउथ के साथ नज़र नहीं आते, ठीक है, इनको कहा जाता है एडिनॉइड्स। यानी कि बेसिकली ये नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जो बिल्कुल यहाँ पर नाक की बिल्कुल बैक साइड पे होते हैं, इनको एडिनॉइड्स कहा जाता है। क्लियर? और बाकी यहाँ पर जो होते हैं मुंह के अंदर उनको सिंपल पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहा जाता है। सो इसी तरह से बात याद आ गई थी लिम्फॉइड मैसेज से, तो आपको बता दिया। तो स्प्लीन जो कि एक लिम्फॉइड मैस है, इट फिल्टर्स, ये किसको फिल्टर करती है, ब्लड को। याद आपको बताया था कि स्प्लीन जो है इट इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पर तमाम मरे हुए रेड ब्लड सेल्स आपको पड़े हुए मिलेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ब्लड है वो स्प्लीन में से होता हुआ जाता है, तो वहाँ पर स्प्लीन के अंदर मौजूद जो मैक्रोफेजेस हैं वो उसको फिल्टर करते हैं। द मैक्रोफेजेस and lymphocytes in the spleen
kill microorganisms in blood, and also destroy or degrade old RBCs. Clear? So these are the 4 important functions of lymphatic system which have been given in our book. और बाकी वो रिटर्निंग वाली हमने बात डिटेल के साथ शेयर कर ली. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इम्यूनिटी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.